Hi everyone, welcome to S4 Sharnya Science classes. Today we are going to discuss about the second type of cell division, that's actually meiosis. Meiosis, also known as reductional division. In the previous video we have discussed about mitosis, which is equational division, which is mostly taking place in the somatic cells. So here we are going to learn about meiosis, which is mostly take place in the sex cells, right, wherever the gamete formation is there. That means gametogenesis occur. So it is a division of diploid germ cells. I told you these division most commonly you can see in the sex cells or the germ cells, right? So where actually you can see that the chromosome number reduces, become half, right? So you can see that in the diploid germ cells that the chromosome number reduces, right, and it's half, and it will form haploid daughter cells, or we can say that the gametes, right? So that means whenever this type of division will be there, the 46, the chromosome number, human being, a chromosome number in a cell is 46, right? It will reduce into its half. What will happen? Here you can see that it has two halves, meiosis first and meiosis second. First it will be, the chromosome number will become half, and then it will make the copy. So here you can see that reductional division. Why we are name it as reductional division? Because here the chromosome number either diploid cell tha, abhi now it will become haploid cells, right? So the chromosome number reduced. So that's why it is called a reductional division, right? Why we are doing this? This chromosome number has to be reduced. Why we are doing that? These chromosome. Why we are telling that this chromosome number has to be reduced into its half? I told you already. These type of reduction you can commonly seen in germ cells or the sex cells, right? Where the gamete formation is there. Gametes are actually our what will say at the time of reproduction, fertilization. These gametes, whether it is sperm, right, which is having only haploid set of chromosome, and the other ovum, right, they will fuse together, right, and they will make the zygote. Zygote will have 23 plus 23, 46. That means the diploid situation will be again restored. So for this, the chromosome number must be become half. Otherwise you can see that if it is totally the same number of chromosome gamete में भी है, तो आपको you can see that zygote में it will be doubled, right? So that condition next stage में it will double and all. So that's not advisable, right? So that's why the chromosome number has to be reduced, right? Then only it can reproduce later, right? Restored later, sorry. So here I already told you it occurred during the time of gametogenesis. Gametogenesis है gamete formation की time. So here you can see that the gamete formation time it will occur. It lead to the haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism, and at the time of fertilization it restores the diploid phase. I already told you how it is happening. Now, what are the key features of meiosis, right? So you can see that this meiosis include meiosis first and meiosis second, but only a single cycle, right? The single cycle of DNA replication is there. That means I told you first the DNA replication will occur, then you can see that the second cycle will also be. So only in the first cycle the DNA replication is actually happening, right? So it will involve the pairing of homologous chromosome, which is for the paternal and maternal chromosomes will be there, and there will be recombination. Everything we are going to learn in detail, right? Meiosis first begins after replication of the parental chromosome to form identical sister chromatids at the S phase. That means this is our normal chromosome, राइट. सो एस फेज में नॉर्मली जो डिविजन होती है उसके पहले जो G1 होती है, देन एस फेज होती है, देन G2 होती है, दैट ऑल थिंग्स विल बी देयर, एंड ओनली वन मियोसिस. उधर मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड. तो वी कैन से दैट दिस एस फेज इज एक्चुअली हैपनिंग बिफोर द मियोसिस फर्स्ट. तो एक ही टाइम में डीएनए रेप्लिकेशन होती है. सो व्हाट विल हैपन, द क्रोमोसोम नंबर, ये है हमारा क्रोमोसोम, इट विल मेक इट्स ओन कॉपी, right? So its own copy, that means identical sister chromatid. तो एक chromosomes की chromatids को हमने पहले भी last video में हमने बता दिया था in the mitosis. If you haven't seen that video, please do watch it, right? So sister chromatids formation होगा, right?
So it's happening in the interphase itself, the S phase, right? So here you can see that once the division will occur, last में meiosis में first में इसका DNA replication everything हो गया. Now DNA meiosis second में just the separation of the chromosomes will be there, right? At last you will get 4 haploid cells, right, at the end of meiosis second. Now we are going to learn about all the events properly. What are the main stages, right? I've already told you meiosis is divided into meiosis first and meiosis second. दोनों में divide किया है. Meiosis first में same prophase first, metaphase first, anaphase first and telophase first. ऐसे another divisions are there. The same way here also we can say that this is karyokinesis, nuclear division first. राइट उसके बाद न्यूक्लियर कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट की पार्ट्स होती है ये सारे, राइट इसके बाद यू कैन सी दैट देयर विल बी इंटरकाइनेसिस नाम की और साइटोकाइनेसिस विल बी देयर, cytokinesis first, right? Then it will lead to either without cytokinesis, without DNA replication, right? इधर कोई DNA replication नहीं हो रही है, just cytokinesis without DNA replication, you can see that, right? So and it will lead to that next stage, right? You can see that एक बार karyokinesis, cytokinesis first होगा, cytokinesis के बाद actually you can see that that will be interphase. Sorry, I told cytokinesis first without DNA. It's not cytokinesis first without DNA replication. cytokinesis होने के बाद interphase है ना, वो interphase को हम interkinesis बोलती है. I already told that, right? Interphase, right? इधर interphase को हमने क्या बता दिया था? It's interkinesis. इंटरकाइनेसिस वाई इट इज बिकॉज ये इंटरकाइनेसिस में नॉर्मली इंटरफेस में डीएनए रेप्लिकेशन होना है बट इधर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, दैट्स व्हाई इट इज इंटरफेस विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन हम बताती है. देन दिस विल बी लीड टू द कैरियोकाइनेसिस सेकेंड एंड कैरियोकाइनेसिस सेकेंड में 4 पार्ट्स, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड टीलोफेज, एंड विच विल लीड टू द साइटोकाइनेसिस सेकेंड. So here you will get last में 4 haploid cells will be there, which is the starting from the diploid, one diploid cell. This is the entire event, right? So you can see in the picture also. We will discuss one by one. The first event in the meiosis first, right? So that's actually the prophase first. Here it is the most complex event. This meiosis first, the prophase first, it's actually divided into 5 subphases, right, which include leptotene or leptonema, zygotene or zygonema, patchotene or pachinema, diplotene, diplonema and diakinesis. That means 5 major steps are there. These all included, right, in the prophase first, right? One by one we will learn. The first stage of prophase first is leptotene, right, or leptonema. क्या होती है इधर? You can see that like in the phase prophase में first में क्या होती है? The chromatin will be condensed to form a chromosome structure, right? So that here also you can see that, right? And here the nucleus will enlarge here. Nuclear envelope की dissociation उधर नहीं हो रही है. It will be happening at the end of the prophase first, right? So this is the leptonema thread, right? So first में the chromatin fiber will become chromosomes, right? Now the second stage is that actually zygotene or zygonema. इधर क्या होती है? These chromosome that ना will be, that means chromatin fibers की condensation बहुत that ना अच्छे से होकर you can see the chromosome prominently, अच्छे से you can see that the chromosome structure will be there. And इसके साथ साथ the similar chromosome, that means in the cell there will be chromosomes from parent, father and mother. So there will be homologous chromosome. That chromosomes को similar chromosomes को हम homologous chromosome बताती है, right? So वो similar homologous chromosome will start pairing. उसी process को हम बताती है synapses, right? So and they will form a synaptonemal complex. So here you can see that here जो ये cell है इसमें जो that now you can see that the homologous chromosomes है वो आकर pair कर there will be a special synaptonemal complex form होगा. And this condition को हम बताती है bivalent formation, क्योंकि इधर you can see that 2 chromosomes are there, bivalent, right? So और इसको tetrad भी बोलती है. Why we are telling tetrad? Because इधर 4 chromatids है. So bivalent or tetrad formation will occur here, right? So these paired chromosomes are called homologous chromosome, which is having the similar structure.
ईच होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड बाइवैलेंट, दैट ऑल्सो हमने बता दिया था. Now the third stage of meiosis, prophase first, you can see that's actually the patchitine or pachynyma. इधर क्या होती है, ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली लॉन्गर फेस है, बिकॉज यू कैन सी दैट जो बाइवैलेंट क्रोमोसोम्स है हमारा, दैट विल स्प्लिट इनटू द क्रोमैटिड्स. आई टोल्ड यू द टेट्राड, 4 क्रोमैटिड होती है, इसलिए इसको टेट्राड स्टेज बोलती है. एंड हियर यू कैन सी दैट देयर विल बी रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्मेशन, राइट. सो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है, यू कैन सी दैट, मान लो ये एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है. I am taking another color so that you can easily understand. Another homologous chromosome भी आ जाएगा, that will start pairing, right. इसका pairing बनेगा, same type की chromosome है, so that right, इसका pair हो जाएगा, देख लो. So these will be pairing in the right previous stage, हमने already discussed this zygote stage में, right. Homologous chromosomes की pairing हो जाएगा, right. After that what will happen, you can see here, राइट. सो ये आकर ज्वाइन कर दिया, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो गया. नाउ दे विल फॉर्म ए स्पेशल नोड्यूल विच इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, राइट. इसके बीच में द सिनाटोनिमल कॉम्प्लेक्स इज ऑलरेडी देयर, राइट. तो वो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल होगा एंड दे विल स्टार्ट एक्चुअली डूइंग द क्रॉसिंग ओवर, राइट. सो हियर यू कैन सी दैट ये है एक क्रोमोसोम, यू कैन सी, राइट. इसका you can see that these are there, and the other one I am taking it's a blue color so that you will understand it clearly. ये next homologous chromosome, वो इसका नीचे से you can see that. So this is actually the crossing over will occur, right. So here they will actually, the genetic exchange, you can see that it will lead to the recombination of the genetic material of the homologous chromosome. That means either what will happen, non-sister chromatids की exchange. ये देख लो, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स है. नाउ इसका एक हम बता रही है, देन इट विल बी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. तो ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स की पार्ट्स की एक्सचेंज होएगा, राइट. सो क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होगा. देयर यू कैन सी दैट द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की एक्सचेंज विच विल रिजल्ट इन द एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटीरियल बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, राइट. सो हियर द रिकॉम्बिनेशन विल कंप्लीट एट द एंड ऑफ दिस पैचेटीन और पैचेनीमा स्टेज. व्हाट विल हैपन, इसका रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया तो यू कैन सी दैट ये जो है आपका ब्लू कलर की क्रोमोसोम, राइट. इसमें यू कैन सी दैट अगेन आई विल ड्रॉ दैट रेड कलर, राइट. इतना पोर्शन इसका आ जाएगा, द सेम वे ये इसके में इतना पोर्शन ये ब्लू वाला भी आएगा, राइट. सो दैट्स एक्चुअली द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में एक्सचेंज हो गया, होमोलॉगस क्रोमोसोम में रिकॉम्बिनेशन हो गया, राइट. सो दीज टू आर द नॉन रिकॉम्बिनेंट्स. ये क्रोमैटिड है और ये क्रोमैटिड है, राइट. इधर नॉन रिकॉम्बिनेंस है, non recombinant chromosome, right. So either you can see that these two are actually the recombinant chromatids है. ये जो है नॉन रिकॉम्बिनेंट है दोनों, और ये जो है ये है हमारा रिकॉम्बिनेशन हो गया क्रोमैटिड से, राइट. दैट यू कैन सी. सो दैट्स व्हाई यू कैन सी दैट बिकॉज ऑफ द रिकॉम्बिनेंट क्रोमैटिड्स द वेरिएशन विल ऑकर इन द ऑर्गेनिज्म, और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो एज सच इट विल गो. सो हेरिडिटरी की भी रीजन हो जाएगा, राइट. नाउ द नेक्स्ट स्टेज जो बता रही है, राइट. सो ये उधर एक क्वेश्चन अरेज होती है, ये सिनेप्सिस क्यों हो रही है. ये सिनेप्सिस क्यों हो रही है, बिकॉज होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को होल्ड करना है, ये पूरा प्रोसेस में होल्ड कर कर पकड़ना है, इसलिए दैट सिनाप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रही है, राइट. नाउ नेक्स्ट फेज ऑफ प्रोफेज इज दैट हमने क्या क्या लर्न किया है. यू कैन ऑलरेडी सी दैट हमने लेप्टोटिन के बारे में लर्न किया है, जाइगोटिन, पैचटिन हो गया, राइट. नाउ द फोर्थ स्टेज दैट्स एक्चुअली द डिप्लोटिन और डिप्लोनीमा. व्हाट विल हैपन हियर, डिसोल्यूशन ऑफ सिनाप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होती है, राइट. सो दैट मीन्स सिनाप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की डिसअपियरेंस. व्हाट विल हैपन, द रिकॉम्बिनेंट होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, राइट, ऑफ द बाइवैलेंट्स विल स्टार्ट सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर, राइट. तो दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू हियर लाइक दिस इट विल बी. तो वो ऐसे वैसे डायरेक्टली नहीं होगा, उसका फॉर्मेशन इधर इट विल हैपन ओनली. तो अभी भी ये पैचटिन स्टेज में ऐसे ही स्टेज में है, वो जस्ट एक्सचेंज करने वाली, राइट. सो उसके बाद डिप्लोटिन में पहुंचाएगा, तो दैट्स यू कैन सी हियर, राइट. एक्सचेंज तो हो गया इधर, बट इट विल बी लाइक दिस, राइट.
So the recombinant homologous chromosomes, the bivalent, separate from each other except at the site of crossing over. बाकी पूरा वो that ना separate हो जाएगा, but ये that ना except crossing over की site में, which is actually एक X-like structure है, उसको हम chiasmata भी बोलती है, chiasmata. इसी स्ट्रक्चर में दैट विल बी रिमाइन लाइक दैट. इट्स जस्ट व्हेन कैन यू रिमूव दैट, इट लाइक ए सिपर मूवमेंट. दैट मीन्स एक जिप की आपने इधर दैट ना ये पूरा आपका जिप है, तो इधर एक सिप दैट ना इसका वो दैट ना ओपनिंग होती है, इसको आपने पूरा नीचे तक लेकर आई, देन ओनली आपका इसका पूरा जिप दो में डिवाइड होगा. तो दैट मीन्स वो जिपर की ये जिप को आपने पूरा नीचे तक लेकर आना है, देन ओनली इट विल बी ओपन. लाइक द सेम वे ये धीरे 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 ये नीचे तक जाएगा, देन ओनली दे कैन सेपरेट, राइट. सो दैट्स एक्चुअली वी कैन से दैट हियर विच विल हैपन इन द डिप्लॉटिन स्टेज, राइट. सो इन oocyte दैट मीन्स हमारा ओवम प्रोड्यूस करने वाली सेल्स ऑफ सम वर्टिब्रेट्स, दिस डिप्लॉटिन स्टेज कैन लास्ट फॉर मंथ्स एंड ईयर्स, right. So I hope you have a clear idea about the diplotin and all. Now the last stage of prophase first, which is the diakinesis. इधर क्या होती है, here you can see that the termination of chiasmata, that means total termination, पूरा नीचे तक आ जाएगा. The chromosomes are fully condensed, वापस उसको condensed, पूरा कंडेंस्ड. दैट मीन्स क्रोमोसोम कंडेंसेशन ऑलरेडी हैपन हो रही है, राइट. उसका पूरा, बिकॉज प्रोफेज में नॉर्मली एक प्रोफेज में कंडेंसेशन होती है, तो इधर प्रोफेज के अलग अलग स्टेज में कंडेंसेशन हो रही है. सो हियर द मियोटिक स्पिंडल, नाउ मियोटिक स्पिंडल है, माइटोटिक स्पिंडल नहीं है. इट विल स्टार्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पोल्स टू प्रिपेयर द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स फॉर सेपरेशन. तो ये हमारा न्यूक्लियस की बाहर होती है. द सेम टाइम द न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियर एनवेलप विल डिसअपियर. तो आपका बाहर सेंट्रोल्स की नॉर्मल प्रोफेज में क्या क्या होती है, राइट, दैट द सेम विल हैपन हियर ऑल्सो, राइट. Now the next stage of that meiosis is that metaphase first, right. So here क्या होती है, you can see that same way जो prophase पूरा हो गया, तो metaphase में क्या होगा है, तो you can see that the chromosome condensation वगैरह complete हो गया. Here you can see that the central movement also occur, spindle fiber formation complete हो जाएगा, right. And this because of the contraction and relaxation of that spindle fibers from both poles, the chromosome will align in the equatorial plane. कौन सी chromosome, जो रिकॉम्बिनेशन ऑलरेडी हो गया है. माइटोसिस में वो रिकॉम्बिनेशन नहीं है. इधर जो है जिसमें यू कैन सी दैट ये जो है इसमें न्यू पार्ट है, इसमें भी यू कैन सी दैट एक न्यू पार्ट है, इसमें भी यू कैन सी दैट न्यू पार्ट है. तो दीज क्रोमोसोम आर एक्चुअली रिकॉम्बिनेशन होने के बाद जो है वो क्रोमोसोम्स है. बट माइटोसिस में ऐसे नहीं है, वो डायरेक्टली कोई रिकॉम्बिनेशन उधर नहीं हो रही है, राइट. नाउ यू कैन सी दैट दे विल बी अलाइन्ड इन द इक्वेटोरियल प्लेन एज सच बिफोर मेटाफेसिक प्लेट बनेगा, राइट. नाउ द माइक्रोट्यूबुल्स from the spindle fiber attached to the pair of homologous chromosome. तो homologous chromosomes की पेयर में अटैच करेगा. नॉर्मली माइटोसिस में क्या फर्क है, माइटोसिस में यू कैन सी दैट द स्पिंडल फाइबर्स एक ही क्रोमोसोम्स की कैनेटोकोर में अटैच कर रहे हैं, बट इधर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की कैनेटोकोर में यू कैन सी दैट इट इज अटैचिंग. एंड नाउ नेक्स्ट फेज में यू कैन सी दैट दीज टू विल सेपरेट. इधर क्रोमैटिड की सेपरेशन नहीं हो रही है, माइटोसिस की केस में क्रोमैटिड सेपरेटिंग, इधर क्रोमैटिड नहीं है, इधर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की सेपरेशन होगा. सो दैट यू कैन सी इन द अनाफेज 1, राइट. द होमोलॉगस क्रोमोसोम विल सेपरेट. उसके बाद क्या होगा, सिस्टर क्रोमैटिड विल बी रिमाइन एसोसिएटेड. व्हाई वी आर टेलिंग सिस्टर क्रोमैटिड से एक साथ होगा, क्योंकि इधर क्रोमैटिड की नॉर्मल केस में हमने बता दिया था, इसी केस में माइटोसिस की फर्स्ट केस में यू कैन सी दैट ये है हमारा सिस्टर क्रोमैटिड, इसका सेपरेशन होती है क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स इधर अटैचमेंट है. बट इधर क्या होती है, इधर यू कैन सी दैट ये हमारा होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, तो अभी स्पिंडल फाइबर्स इधर है, तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम पहले पेयर किया था, एक साथ आ गई थी, है ना, अभी इसको सेपरेट कर रही है, राइट. सो इधर सिस्टर क्रोमैटिड की कोई सेपरेशन नहीं होगा, ये सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन एसोसिएटेड. ये कब होगा, इट विल बी हैपन ओनली इन द मियोसिस सेकेंड, राइट. सो नाउ इट विल बी shifted to the poles, right. So you can see that telophase में क्या होगा, the chromosome, that means homologous chromosomes को दोनों poles में लेकर जाएगा the spindle fibers, right. So here you can see that the nuclear membrane and the nucleolus reappear होगा वापस, right. उसका पूरा कंटीन्यूएशन सेपरेशन तो हो गया, right. So now you can see that the nucleolus that ना reappear होगा, हमारा 2 haploid nucleus बनेगा, and the haploid nucleus having one set of homologous chromosome, other haploid nuclei another set of homologous chromosome होगा, and that condition को हम dyad बोलती है. तो you can see that it is one chromosome which is having 2
क्रोमैटिड्स, तो इसलिए डायड बोल रही है, राइट. वन क्रोमोसोम विच इज हैविंग टू क्रोमैटिड्स, इसको डायड बोलती है, राइट. नाउ यू कैन सी दैट इसके बाद साइटोकाइनेसिस फर्स्ट होगा. साइटोकाइनेसिस इट कैन occur or it may not be occur, that's up to them, right. So either cytokinesis ho gaya, then you can see the two daughter cells which is having one set of homologous chromosome and the other having another set of homologous chromosome. ये सबसे short phase of that ना है शॉर्ट फेज में एक है. इसके बाद यू कैन सी दैट शॉर्ट इंटरफेस विल बी देयर विच इज को हम उसको बताते हैं इंटरकाइनेसिस, क्योंकि हमने ऑलरेडी बता दिया था इधर डीएनए रेप्लिकेशन तो नहीं होगा. नॉर्मली इंटरकाइनेसिस इंटरफेस में एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होना चाहिए, बट इसका डीएनए रेप्लिकेशन ऑलरेडी मियोसिस फर्स्ट की पहले हुआ है, राइट. So here you can see that, and this will be followed by the meiosis second, right. So this short stage between the meiotic division हम उसको interkinesis बोलती है rather than interphase. You can say interphase also, but interkinesis बुलाती है. इधर you have to remember DNA replication नहीं होती है, right. Now next is the meiosis second. इधर क्या होती है, ये जस्ट लाइक दैट ऑफ माइटोसिस, राइट. तो अभी हमारा रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम हमको मिल गया. अभी ये मियोसिस सेकंड जो है इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, ये जस्ट माइटोसिस जैसा है. दैट मीन्स अभी क्या हो रही है, ये 46 क्रोमोसोम्स को इक्वेशनल डिविजन के बाद होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गया तो 23 कर दिया. नाउ ये है मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया. अभी जो है अभी इसका दोनों की कॉपी बनाना है, तो ये सेम प्रोसेस इधर कॉपी बनाने वाली माइटोसिस जैसा ही है. सो सेम वे, बट हियर 2 सेल्स अदर वो दोनों उसका कॉपी बनाएगा. टोटली हमको 4 हैप्लॉइड सेल्स मिल जाएगा लास्ट में. दैट्स इट, right. So here meiosis second में it has prophase second, metaphase second, anaphase second and telophase second, right. So what will happen here, you can see that meiosis second, right, उसका prophase second में, prophase second में क्या है, it just that ना initiated immediately after the cytokinesis first, right. तो chromosome align and they will become more contact, right. Again it will become more contact, you can see that again, right. So that means पहले वो 2 सेल्स में कर दिया, तो अभी वापस वो कॉम्पैक्ट में कंडेंस्ड स्टेज में आ जाएगा. तो इधर प्रोफेस में पहले क्या होती है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियोलस है, बाकी जो सेल ऑर्गेनल्स है, वो सब कुछ डिग्रेड करना शुरू होगा, राइट. नाउ द मेटाफेज सेकेंड में यू कैन सी दैट ये सारा हमारा क्रोमोसोम्स विल बी अलाइन इन द इक्वेटोरियल प्लेन, सेंट्रियोल्स विजिबल होगा, स्पिंडल फाइबर कम एंड अटैच टू द काइनेटोकोर. बट इधर यू हैव टू रिमेंबर, इधर किसका काइनेटोकोर में, एक होमोलॉगस में एक सेल की बात कर रही है. द सेम विल हैपन इन द सेकंड सेल आल्सो, राइट. सो हियर यू कैन सी दैट एक सेल की बात कर रही है पहले, ये सेम डिट्टो इसमें भी हो जाएगा, राइट. सो हियर यू कैन सी दैट इधर पहले होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को हमने सेपरेट किया था, तो इधर क्रोमैटिड्स की सेपरेशन नहीं हुआ है. नाउ यू कैन सी दैट इधर क्या हो रही है, जो रिकॉम्बिनेशन होने के बाद जो क्रोमोसोम है उधर हमारा स्पिंडल फाइबर आकर अटैच करेगा. सो हियर यू हैव टू सेपरेट द क्रोमैटिड्स, राइट, सिस्टर क्रोमैटिड्स की सेपरेशन. तो एनाफेज में यू कैन सी दैट अगेन, राइट, इट बिगिंस विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम विच इज एक्चुअली होल्डिंग द सिस्टर क्रोमैटिड्स टुगेदर. देन दे मूव टू द ऑपोजिट पोल्स. तो हियर ये सिस्टर क्रोमैटिड्स की सेपरेशन होगा, राइट. एक रिकॉम्बिनेंट वाला, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट, मीन्स एक रिकॉम्बिनेंट वाला, नॉन रिकॉम्बिनेंट, दैट कैन बी एनी वे वाट एवर इट इज, राइट. तो आपको ये ऑलरेडी रिकॉम्बिनेशन हो गया, वो सिस्टर क्रोमैटिड की सेपरेशन. तो यू कैन सी दैट विल बिकम 2 हाफ्स, दैट विल बी कंप्लीटेड, दैट ना जो पोल में लेकर जाना, दैट विल बी कंप्लीटेड इन द टीलोफेज 2, राइट. सो 2 ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम्स अगेन, राइट, एनक्लोज्ड इन द न्यूक्लियर एनवेलप. तो ये हमने ऑलरेडी बता दिया था, जो टीलोफेज सेकेंड है वो और टीलोफेज जो है वो प्रोफेज की जस्ट ऑपोजिट है. तो व्हाट विल हैपन, इट विल रीच इन द पोल्स, तो वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर करना शुरू करेगा, बाकी जो सेल ऑर्गेनल्स है एवरीथिंग विल कम एंड दैट ना उसका अपीयरेंस शुरू हो जाएगा उधर, राइट. सो हियर यू कैन सी दैट दिस विल बी enclosed in the nuclear membrane, right. So here you can see that it will initiate the next cytokinesis idhar shuru hoga, right. So here you can see that the 2 groups of chromosomes once again get enclosed by nuclear envelope and cytokinesis will be followed by this, right, which will result in the formation of tetrad of cells. You can see the tetrad again, right. So you can see that the 4 haploid daughter cells will be there. So 1 से 2 ऐसे 2 सेल्स से 4, दैट्स वाई द टेट्राड 4 हैप्लॉइड सेल्स
हम जो बता रही है, राइट. सो हियर दैट विल बी, नाउ इट विल बी फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस एंड 4 सेल्स बनाएगा, राइट. सो ओवरऑल स्टेप यू कैन सी दैट पहले मियोसिस फर्स्ट में प्लान दैट ना इंटरफेस हो जाएगा, प्रोफेस में यू कैन सी दैट रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, दैट्स अ स्पेशलिटी हियर. प्रोफेस हैव टू डिवाइड लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस. उसके बाद आपको रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन दैट ना डीएनए मिल जाएगा. उसके बाद यू कैन सी दैट मेटाफेस में उसको अरेंज करेगा. हियर देयर विल बी नो क्रोमैटिड सेपरेशन, ओनली होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की सेपरेशन. देन अनाफेस में यू कैन से दैट एंड इट विल बी फॉलोड बाय टेलोफेज, 2 daughter cells which is having haploid number of chromosome. Now these 2 cells will undergo एक टाइप ऑफ माइटोसिस, राइट. तो इधर यू कैन सी दैट सिस्टर क्रोमैटिड्स की सेपरेशन हो जाएगा, सेम विल इन बोथ सेल्स, राइट. सो यू विल गेट दैट सेम कॉपी ऑफ दैट, राइट. सो haploid, haploid, haploid. So total 4 haploid cells of chromosomes you will get. Now what is the significance of meiosis? That also we have to cover here. You can see that it's actually conserves the chromosome number of each species, right. तो हमारा chromosome number maintain करने के लिए at the time of reproduction it is very important. आपने मैंने पहले से बता दिया था 46 chromosome आपने half में divide नहीं हुआ है तो at the time or last में you will get half, right. So this will be if it is sperm, right, it is ovum, right. ये से नहीं है तो your chromosome number will be doubled, right. तो इसलिए वो chromosome number को maintain करने के लिए it's very important the meiosis has to occur, right. and obviously इधर recombination हो रही है, इसकी वजह से हमारा genetic variation which is actually leading to the evolution, ये crossing over की वजह से recombination की वजह से हो रही है ये variation, otherwise it will not happen, right. So it's very important for the evolution, right. So these are the main significance of meiosis. I hope you understand the meiosis process also very clearly. If you understand this video, please share with your friends and thanks for watching. Thank you.